Hello riders, welcome to Garage Uncle. So today we have Avenger 160 streak with us. So there are a few points which I just want to highlight on this. The bike have just serviced within 2-3 days ago in one of the service center, but customer was not satisfied, so he have just called us and had put some complaints regarding some of the points. And what we have seen, there are certain points which might be the mechanic have not highlighted and might be not resolved properly. So we have just saw that the brake, if you see, this is not properly operating. Because of this reason, the bike is not moving forward. And due to this, if you see, the wheel is jammed. The wheel is, it is not moving a single centimeter also. Because of this reason, the customer might facing a problem of, power pickup and loss of his efficiency, also fuel efficiency in this case. So riders, anytime you make sure that you see this properly. The brake are very essential in this rainy season. So make sure that you properly clean your caliper. Okay, service your caliper on time interval and check your disc pad properly in that case. And the second thing what we have saw is a clutch pre-play. If you can see over here, the idle clutch pre-play should be maximum 2 centimeter. 2 centimeter could be the idle free play for it, but it is more than 2 centimeter. It could be I think so 4 centimeter or something. Because of this reason, he's getting false neutral and he's not able to put the proper gear into the during the time interval. And second thing, now I'll show you the thing in the engine. I'll start the engine now. I'll start the bike. I'll now hear the voice in the engine. So if you can hear it, there's a timing chain, a tappet voice and a chain tensioner problem. Might be meaning to check other thing also in that case. So stay tuned for the entire video of this, and we will upload an entire complete video of this problem. We will solve this problem and we'll update you how we basically need to solve this problem and what is the remedies for it. Thank you. इसका एयर फिल्टर अच्छा ही है, सो हवा मार के रिफिट करेंगे। इसका अभी एयर फिल्टर क्लीन कर रहे हैं। एयर फिल्टर अभी फिट कर रहे हैं इसका। इसका अभी आगे का कैलिपर क्लीन कर रहा है। इसका अभी पिस्टन फिट कर रहा है, क्लीनिंग हो चुका है इसका। ये इसका दूसरा वाला पिस्टन है, इसको ऑयल में डिप करके लगा रहे हैं। इसका कैलिपर अभी फिट कर दिया, इसका पुराना वाला ऑयल चेंज कर रहा है। इसका पुराना वाला ऑयल आप देख सकते हो पूरा खराब हो चुका है, तो अभी चेंज कर रहे हैं। इसका ब्रेक ऑयल और बेडिंग कर रहे हैं अभी। इसका टोटल बॉडी अभी ओपन कर लिया, इसको क्लीन कर रहे हैं। इसके अंदर कार्बन जमा हो चुका है, आप देख सकते हो, तो इसको अभी क्लीन कर रहे हैं। इसका अभी टोटल बॉडी क्लीन हो गया, तो अभी फिट कर रहे हैं। इसका अभी टाइपेट सेटिंग कर रहे हैं। इसका दोनों साइड का बोल्ट ओपन कर लिया, तो अभी इसका टाइपेट सेटिंग करते हैं। इसका अभी टाइपेट सेटिंग कंप्लीट हो गया। इसका अंदर का जो बोल्ट था वो बहुत ज्यादा लूज था, जिस वजह से आवाज आ रही थी, तो अभी ये कंप्लीट हो गया। इसके दोनों साइड के बोल्ट भी लगा दिया। इसका अभी स्पार्क प्लग ओपन कर रहे हैं, ओपन करके चेक कर दे। इसका स्पार्क प्लग खराब हो चुका है, इसको अभी चेंज करेंगे। इसका अभी चेन क्लीन कर रहे हैं। इसको अभी ब्रश से क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। इसका अभी सर्विसिंग कंप्लीट हो गया, अभी इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और फिर कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे।